Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your second lecture of artificial intelligence. In the previous lecture, we had already discussed about the search algorithm. We had already discussed about initial state, successor function, goal test, and action cost. These are the four main major parts of a search algorithm. In any search algorithm, we have to be careful about these four parts. An initial state means where we have to start our search. Successor function mean this is a set of states जहाँ जो कि हमें फॉलो करना होता है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टुवर्ड्स द गोल स्टेट. हमारा गोल टेस्ट होता है जो कि हम एक स्टेट पे अप्लाई करते हैं. वो ट्रू उस केस में आता है कि वेदर वी हैव फाउंड द गोल state or we have found satisfies the goal condition as well. Goal condition से मुराद वो condition है कि that actually this state is approaching towards the goal state or not. Action cost जो कि मैंने अभी आपको 9 बजे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में कि एक्शन कॉस्ट होती है कि a particular cost that is carried when we are performing, we are going to perform an action. अब C means here a cost. If we are moving from state X to A and then Y, what cost we shall pay for that? ठीक है. अब in the next slide, we had discussed about the output. What is the output of a search algorithm? This is actually a sequence of states. Sequence of states, and these sequence of state is starting from initial state and it is leading towards the goal state. The sequence might be optimal in cost. Optimal का मतलब ये है the best solution. हमारे पास initial से final state तक पहुंचने के लिए बहुत सारे multiple solutions हो सकते हैं. Optimal solution वो solution होगा जो कि minimum in cost होगा. फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेट से मतलब हमारे पास एक डेस्टिनेशन पॉइंट है लाइक हम फैसलाबाद में हैं और हमारा जो गोल स्टेट है वो इस्लामाबाद है. हमें फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाने के लिए हमारा जो कॉस्ट हो सकती है वो माइलेज है किलोमीटर्स में. तो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन वो होगा दैट विल बी द मिनिमम. हमें कम से कम माइलेज ट्रेवल करके अपने फैसलाबाद जो कि हमने इनिशियल स्टेट डिसाइड किया है इस्लामाबाद जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा. So what will be the output? Output will be the sequence of states that we are going to visit from Faisalabad to Islamabad. These are the different parameters of a search algorithm. Actually, the set of successors is shown mathematically as well. Like अगर आप की initial state x है और आपकी final state y है, तो आप x से y पे मूव करने के लिए आप पहले x से a पे भी जा सकते हैं एक ऑप्शन और फिर y पे जा सकते हैं. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप x से b पे जाएं और देन z पे जाएं. इसको हम मैथ्स की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि s of x, s मीन सक्सेसर फंक्शन, x is your initial state. Is that clear? It is already completely discussed in your previous lecture. In previous slide, I had told you in detail about initial state, goal state or the ending state, and the path, the cost function. In this lecture, we are going to study about the details like what we have to follow from arid. Arid is your initial state. We have multiple options like we can move from arid to CBU, we can move from arid to Timisoara, we can move from arid to Oredia. What is the best? Arid to Zerind. These are the multiple paths that we can follow from initial state towards the goal state. What is the best solution? The best solution is that you have to follow the sequence of paths that will lead to the final state. In this slide, an important point is discussed. What is that? Cycles. What is cycle? Cycle means the repetition of the state. You are moving from one point and you are coming back towards the same point. Cycle. Like आप arid से Zarind जाएं, Zarind से Oredia, then CBU. अब उसके बाद फिर arid की option है, backward आने की option है. So this is the important point. Cycles can cause non-termination. कि आप एक loop में फंस जाएं, आप एक पॉइंट से ट्रैवलिंग स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पे ट्रैवलिंग बैक करें. आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जो है
वो उसी पॉइंट पे बार 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 मूव कर. So you have to avoid cycles. What do we mean by cycles? Cycles means ये that you have a starting point. You are going to start your traveling, and starting point, for example, is Arid. And again, you have three options: Arid to Zeren, Arid to Timisoara, and Arid to Sibiu. Arid to Zeren, and after Arid to CBU, you select the Arid to CBU. What is the cycle? You are coming back from after reaching towards CBU. आप Arid से CBU पे जाते हैं और वापस कहाँ आ रहे हैं again? Arid पे. So this is what cycle. This is highlighted. Cycles mean non-ending loop. आप एक process को again and again perform करते जा रहे हैं. This is the concept of cycle. So you have to avoid cycles in your search algorithm because these are going to lead towards the non-termination. Selection rule. The order paths are selected from open. Open क्या था? Open हमारा एक data structure है. जब हम search algorithm को implement करते हैं तो उसके लिए हम एक data structure use करते हैं और उसको हमने नाम दिया है open. Open has a critical effect on the operation of search. पहला ओपन हमें हेल्प करता है. इस डेटा स्ट्रक्चर से हमें पहली चीज क्या पता चलती है? वेदर और नॉट अ सोल्यूशन फाउंड. क्या हमें सोल्यूशन मिल गया है या नहीं. हम ओपन पे क्या रखते हैं? ओपन पे हम सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स को रखते हैं. जैसे हम एरिड से जेरिन जा सकते हैं, वन सीक्वेंस. हम एरिड से सीबीयू जा सकते हैं, दिस इज अनदर सीक्वेंस. सो open is the data structure that we have to maintain to implement our search algorithm. पहली चीज हमें ओपन से पता चलती है कि वेदर और नॉट अ सोल्यूशन फाउंड. दूसरी चीज हमें ओपन से पता चलती है द कॉस्ट ऑफ अ सोल्यूशन इज फाउंड. तीसरी चीज द टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर सर्च एल्गोरिथम इज क्लियर फ्रॉम द open data structure. These are the important roles of open data structure. How to select the next path from open? All search techniques keep open as an ordered set, a priority queue. सबसे important बात ये है कि data structure की type कौन सी है? This is a queue. Queue follows the working. Queue is first in and first out. It is abbreviated as FIFO. First in and first out. We have given the name this queue as open. Queue is basically a data structure. If open is empty, terminate with failure. इसका क्या मतलब है कि ओपन का खाली होना हमें बताता है कि हम वी आर नॉट सक्सेसफुल. अगर ओपन empty नहीं है, if open is not empty, what is the next? Get the next path from open. तो open पे कोई ना कोई path पड़ा होगा. path कैसा कि हम arid से zerin जा सकते, arid से cbu जा सकते, like this is the second point. उसके बाद इफ द पाथ लीड्स टू अ गोल स्टेट, टर्मिनेट विद सक्सेस. अब आपके पास अगर आपका पाथ एंड हो रहा है गोल स्टेट पे, तो आप सक्सेस शो करें, मैसेज ऑफ सक्सेस शो करें और उसके बाद प्रोसेस को टर्मिनेट करें. पहला टर्मिनेशन है ओपन इज एम्प्टी, डेटा स्ट्रक्चर इज एम्प्टी, सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव योर गोल स्टेट देयर. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. हमारे पास अब जो टर्मिनेशन है उनमें पहला है कि ओपन अगर एम्प्टी है तो हमारा प्रोसेस इनिशियलाइज ही नहीं होगा. हमारे पास कोई भी पाथ नहीं है, कोई भी इनिशियल स्टेट नहीं है जहाँ से हमने सर्च को स्टार्ट करना है. दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास आपके ओपन डेटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उस एलिमेंट को रिमूव करेंगे अपने ओपन से. इसलिए रिमूव करेंगे ताकि आप उसको फर्दर प्रोसेस कर सकें. प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने में आप पहले चेक करेंगे कि क्या जो पाथ आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर से एक्सट्रैक्ट किया है, क्या वो पाथ आपका गोल टेस्ट को मीट कर रहा है. अगर तो वो गोल स्टेट को मीट कर रहा है तो आप सक्सेस का मैसेज शो करेंगे और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. अदरवाइज़ आप फिर उस पाथ की चाइल्ड नोड्स को दोबारा से डेटा स्ट्रक्चर में एंटर करके नए पाथ को सेव कर देंगे ताकि आप फर्दर अपने सर्च के प्रोसेस को जारी रख सकें. हमारे पास जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं उनको जज करने के लिए 4 पैरामीटर्स हैं जहां से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखें और लोगों की ज़िंदगी में आसानियां बांटें. अल्लाह हाफ़िज़.